So first question is this: uh, there is a company which have employees that are the names A and B. They can access to the website or something and use resources. For example, CPU and desktop and monitor are the resources. uh, okay, so they can access any floor and can access resources. They can access only one time, but with different emails they can access again. So now we have to. So this is a problem as we have, suppose the company wants to check uh, about the employees. Company uh, wants to check about the employees, like uh, who is visiting. Like for example, which employee is visiting how many times and which is the most visited floor of each employee okay, and what are the resources that was used by the employee. Okay, so I have the data in the entries column. Let me see it. Yeah, I have the data in the entries column. Now what I have to do, uh, let me close this one. Yeah. So what I have to do now, I am on the video. It is for a product-based company, SQL interview question, scenario-based. And today we are going to do like 3 to 13. So we have to do this much at least. Practice skill. Okay. So now we have to convert the upper input list into this list. Now what I can assume from this? So we want to group by name will be there because we have to at last we have to output the result using only the name. So group by name will be definitely will be there, and and also we can calculate total visits using group by name. Okay, we can calculate total visits easily. Done. Now for the most visited floor. For the most visited floor, what we can do multiple things. We can group by floor and count how much each floor employee has visited. This can be good. Uh, and then we can use and then we can combine it as a CT and use it later, for example. Okay, but what about the resources? What about the resources? I don't know what about the resources. How can we so we have to make a kind of set type, I guess. Set type, because you have to just take in what we have to concatenate maybe using the comma. Let me search about it. Set or set type column in uh, MySQL to. Okay, so we don't have to use set, we can use distinct. I think I can think of something like for the resources we can use we can go over all the. Okay, so
uh, when we did group by name, we can uh, take distinct resources and basically add them. Okay, so wait a second. Suppose I have a table in SQL and I have resources column in that. Now for each employee, I have to output most used resources. There can be more than one time one resource is used for each employee. So I just want to see the idea. For example, one laptop. So we will use distinct. I think distinct is definitely going to be there. He's using tens rank. Most frequently used resource including ties. Most frequently used resource. We don't want most frequently used resource. I want just uh most used resource. No, most used resource. No. We just want to print every resource used by employee, just unique. So you can use this trend, right? But I have to like yeah, I want to enter in a single group, so I can group concatenate types. Okay, so we can do this after doing group by. Let me try it because hands-on practice is very much necessary. So I will form a CT, that is common table expression, and what I have to do, I will take select name, and I have to take visits. So for now I will do count, and this will be count as tot what I have to print is like total visits. So I will name it total visits from what is the table name? Table name is entries, and I will group by name. Okay. So and now I can select all from CT. So let's see. Yeah, we can get it. Now what also we can also get the resources used as a group concatenated. Group concat I have never used it before, so uh, I can search for it. Give more example and how it is used. Okay, we will do it, but I don't know how it is going to do. So we can our like resources. So we'll choose resources here, group concatenated, and as uh, resources used. Resources used. Now let me try to run it again. Like yeah, but it is not getting the distinct. So we'll uh, I will put distinct here or there. I don't know. Let me see. Well, this is working, but I don't know how. The group concatenating, and I'm getting the okay. So I have to search how it is working, but it is working perfectly fine. Okay. CPU, desktop monitor, web printing it. Now about what about the most used visited floor? For this, I can. For this, I have to like group by floor, and then we have to use. Um, I have to think I have done like something. Now just I have to calculate about the most visited floor.
For the most visited floor, I think dense rank can be used, but I have not used it for a while, so I will first learn about it. So group concat is used when you want to combine multiple rows into a single string for each group. Take all the values in a group for a group and join them with a commas or another separator. Okay, okay, okay. Mm-hmm. Remove duplicates. For removing duplicates, create distinct. Okay, I got it. Okay, distinct removes before values. Okay, custom separator we can use. Resource and separator. This okay. Custom separator we can use here. Sort values inside the list. We can use order by also here. Okay, got it. Okay, okay, I got it. Now for let me show ChatGPT what I want and what I've done. Now just um okay. So my thinking is correct to find the most varied floor. First calculate visits per name floor. Okay, calculate visits per name floor. Okay. Okay, so we can group by like okay, I got it. Group by name and floor. We can do it. And also we can count the visits and we can do total also after it. Okay. Yeah, good, good, good. Okay. Select name, floor, and count as visits. So we will have the visits of. Okay. Now we need a floor having the maximum visits. So we will use a subquery which will count the maximum visits, I guess, with floor. Okay. Select name, floor, count and group by name. And so this is the like CT. And now we will select from CT and from where visits equal to my. Okay. Now we will select only the one which have the highest. Okay, so for this we are using a subquery where visits equal to my select max of visits from floor visits f2. Okay, okay, okay. Logic for each row. Okay, like select max from floor visits f2 हमने एक और f2 बना दिया है where each. Okay, I got it. I just got it now. For every row a1 2, yeah, I will check. Okay, approach 3. Like this is the first approach, right? Approach 2. So what is the approach 1? Correlated subquery. Hmm. Join with the maximum count. So yeah, and let me think of it. Let me think of it. Oh, with floor name as select name. Okay, 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 okay. We're grouping it. Just we're grouping it and counting the visits. Counting the visits floor wise. Okay. And another CT common table expression named MX. And in that we are having the max visits from floor visits. Okay, we will calculate the max obviously and group by the name. So we will calculate max visits per name. Okay, we can also calculate here total number of visits, sum of visits we can do, and like we have to combine at the end. So we select F name, join. Okay, okay, okay. Okay, so I want to solve it first by this, and then we will go to the density solution. So yeah, I'm erasing this because I have to write it again. So simple things. So first we will pick city one,
as I will use it to make select name floor. uh, and what you can do, we can do total floor visits. Okay, that would be like count, just like count. Okay, now we can go for from the entries table, and what we can do, group by name and floor. Okay, this is perfect. And now later we will select from city. Just I want to show what, okay, I've got this. Now we will use another CT2, as we can use so in this I want to just make like I want to take select name, I want to take select floor for the four. Wait a second, like select name. Okay, select name, we can select name, and we can take max of the total floor visits. Okay, as most visited. Okay, wait a second. As a max we are doing it. For example, for now, from city group by name. I just want to see what it is. I don't know what it is. Select from city to. So this is like two the max, and we can now like we can like join them. But what I have to print? What all I have to print? Okay, now just we are trying to get the most relative floor now. For example, okay. Now we'll select name. Low, we can use case when, I guess. Case when now. For floor visits F, join MX. So we'll join both of these. So like it's like name and floor we are going to print from the CT. Join CT2 where like on CT dot name equal to my CT2 dot name, and CT dot floor equal to my total floor visits equal to my CT2 dot mx, I guess. I don't know about this. So this is correct. This is correct. This is correct. This is correct. I'm having an error here. I don't know why I'm having an error here. From entries, enter the table right. Okay, got it. Column name is ambiguous. Or we can print CD dot. Okay, so we have got like floor, which we can like most visited floor. Okay, done. Like okay, now we can check like 1 and 2. Confirm. Now what we can do for the total visits? Total visits we can group like when we are grouping by the name, we can like sum. We can have it here. And we can like sum. What we are like total visit. Okay.
So what we can do like max over to the results like name now again means sum. Mm, sum of like total floor visits as total visits. Okay, so this is good. And now later when we are printing, we can print total visits. Like no, not here. As like total visits here. So I guess this will work and this will work fine. Total visits we have now. And now about the resources. For resources we have to also take resources here. We can group concatenate I guess. Concat resources as resources used. We can just take it here and then later we can again take it group concat resources, or we can just do one thing like we are making a group, so we have to take the group concatenated I guess, because we want like this thing. We're taking it good. Okay, this is good. But after this, we have like a group already. Can we? Oh, suppose I have laptop, mouse, fan, mouse, laptop. Can I group content? Yeah. So this will not work, I guess. So we have to join again. Okay. So this doesn't matter with it. Okay. This is fine. This is working fine right now. Alright, I can join with entries later. This is good. Now I can join with entries over here. Join entries. E. Okay. And e dot name equal to my cd2 dot name. Okay. So this is fine. And now I will group concat the distinct e dot resources. We have resources as resources used. So the column floor and ambiguous. Okay, floor is ambiguous now. CT dot I'm just getting confused and confused. So let me ask ChatGPT. I is good. I'm doing count visits per and max floor, get total visits, one like two deleted one issue group content is resource. I'm joining entries E or directly. MySQL will complain or give wrong result.
Because you're mixing aggregated and non-aggregated columns without a group by. But like we have already formed a group, na? So bad, man. So bad. It was so fucking bad. But we want most visited cover, na? But a grouping by like the printing by most, the printing most visited cover. Okay. So it's like if we can, okay. So wait a second. For example, I am printing this. I just want to see what like what just okay, I can't print everything. I don't know why I can't do things. Okay, tell me the table. Entry ऐसे था entry was like this. Okay. सीटी ने क्या किया, सीटी ने हमने सीधे में नेम पर ग्रुप किया और फिर आपको हमने टोटल फ्लोट विजिट इजीली काउंट कर ले, काउंट यूज करके दे एग्रीगेट फंक्शन सीटी टू में हमने क्या किया, सीटी टू में मैंने एक टोटल 4 विजिट्स काउंट करने के लिए ए में जितने विजिट थे उनका मैंने मैक्स निकाल लिया और टोटल 4 विजिट्स यहाँ हमने इनका मैक्स निकाल लिया और आखिरी में हमने इनका सम निकाला टोटल विजिट। इट इज गुड। नाउ अब मेरे को अगर इसके अपोजिट में वो ही मिला वो कैसे देता क्या अपन। आई डोंट नो बट द फंक्शन इज सो गुड है। फर्स्ट वन नाउ हम मैच करेंगे ना, फॉर 4 विजिट इक्वल टू मैक्स विजिट एग्जाम में एट द एंड हमें ये प्रिंट करना होगा। तो हमने ये प्रिंट करना है फर्स्ट फ्लोर टोटल 4 विजिट्स 2 है, मैक्स 2 हमने निकाल लिया। नाउ सेकंड वन क्या हुआ, वन एंट्री ऑन ये हमारा हुआ करंट रो, फॉर एग्जांपल करंट रो फॉर ए ये हो गया एंड सोर्सेज क्लास सीपीयू 2 2 3 या। नाउ रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट नेम से गया हमने फ्लोर्स नहीं, नेम हमारा इंपॉर्टेंट है। नेम से रीड फ्लोर अलग हो सकता है, फ्लोर की टीम फ्लोर जो वाला सिटी वाला। ओके हाँ भाई डन। विंडो फंक्शन बता दे भाई।
So before ChatGPT, I want to listen to them. Okay, got it, got it. So for the I counted total for visits for each line. Now for this, इसने क्या किया कि rank कर दिया, rank over station by floor. Yeah, so again. Okay, so partition by group was for each one. Okay, got it, got it. Order by. So I'm going to copy it and I'm going to paste it here because I will use it later. But I will or I can make a new. Wait a second. Okay, I will paste it here and now I will. I guess I will let it be this. Uh, I will remove this. I will remove everything. I just want to go to select city, select from city, and yeah, rank 111. So this is wrong. Why this is wrong भाई? उस टाइम नहीं आता ना ऐसा होता है क्या?
ओके, सो विंडो फंक्शन पहले अवेलेबल हो जाता है, तो मेरे को यहाँ पे काउंट ऑफ कुछ भी देना है, कुछ भी दे दो, ठीक है. So now this will give correct answer, like first rank for this and first rank for this. Now I can also limit mm, city and where rn equal to my 1. Okay, like mm, so what can I do? Like where तो पहले execute होता है. rn क्यों नहीं दिख रहा है? इसको as rn कर दिया. So like this is one thing, and I have to print name and floor as most visited floor. Okay, so like I've got this, but he's printing like okay because we have to like join later on. So we're gonna combine it like cd2 and cd2 as, and now what we can do with cd2 is like we can get column separate, like select name total count of total as total visits, and we can do uh, group concat of distinct of resources as resources used from entries group by name. Okay, and now this is like one. Okay, so what we are gonna do, we can like can we join where after where? Okay, like let me try on ct1 ct dot name equal to my, can we join is not
Okay, I don't know, bro. Okay, so we're getting it like completely okay. Like, so we have to use where after it. Okay. So we have finally done it. Like, okay, we've done it. Using the like normal rank function, we have to do it. I will ask about the dense rank function. I don't know. This is the first question, and we are going to do. I don't know how I will do it, but I will do it anyway. I'm just sick. Oh. But here we have used like string aggregate function and resources divided by the group name. So it is containing like, oh yeah, I'm. Mhm.
I've done the better solution. So yeah. Let's go to the next question. It's good questions. I don't know. I'm just one. Oh wait. So yeah, this is the order sequencing. So for this is like the first question I did today of SQL, and the related query I wrote uh, is this. So I'm gonna take screenshot of this. This is very simple query that I've wrote. Mhm. Now we are going to move to the next question. That is the second question. Second question is like I hate the questions on date. Write a query to provide the date for any occurrence of Sunday in future from given date. Okay, I just hate date queries, but I have to do it anyway. So for example, write a query to provide the date. Write a query to provide the date for any occurrence of Sunday. So the query to provide the date. So we have to provide the date for the nth occurrence of Sunday in future from the given date. So we have given a given date. Okay, and we have to provide the nth occurrence of Sunday in future. So from the word occurrence, I go to window function. I go to row number or I go to somewhere like rank वगैरह. This is my point of view of solving occurrence type problems. Uh, can we use dense rank? मैं भूल गया कि dense rank यूज करना चेक करना था लास्ट क्वेश्चन में बट अभी हम आगे बढ़ेंगे. Wait functions. Absolutely, this is the better choice here. कैसे dense function over हमने by addition किया dense किया ओके. ओके सीडी तो सेम गया हमने कुछ भी अलग नहीं किया. सेम एग्जैक्टली सेम. कोड तो कुछ चेंज नहीं हुआ. रैंक एंड डेसिनेंस में फ़र्क क्या है भाई कि हमें फॉर एग्जांपल ये दे रखा था नेम था विजिट था फ्लोर था. अब 5 5 दे रखा है हमें. तो यूजिंग रैंक होगा तो दोनों को वन डल जाएगा. पर डेंस रैंक में so there is something like did functions is 1.
Uh, okay. A little confusing because like, I'm done with this. Uh, MySQL point of view से समझाना मेरे. तो बेसिकली डेट फंक्शन में थोड़े बहुत पढ़ लेता हूँ, जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ. रिवाइजिंग डेट फंक्शंस. सो बेसिकली क्या हुआ है कि डेट फंक्शन में एसक्यूएल करंट डेट कैसे निकालते हैं. कर डेट, वी विल गेट द करंट डेट एंड टाइम फॉर दिस वी सिलेक्ट नाउ. नाउ से हमें बता देगा कि इस करंट टाइम से के लिए करंट टाइम दोनों जगह तो नाउ एंड सिर्फ डेट चाहिए तो कर डेट कर टाइम. एक्सेप्ट पार्ट फ्रॉम डेट. फॉर एग्जांपल ये हमारी डेट है तो हम सिलेक्ट ईयर लिखेंगे और हम उसको एक स्ट्रिंग सिंगल्स में डालेंगे तो हमारे पास ईयर आ जाएगा, मंथ आ जाएगा. ऐसे ऐसे करके हम डेट भी निकाल सकते हैं. और मंथ मंथ नेम हम निकाल सकते हैं. ठीक है, डे नेम भी निकाल सकते हैं हम. हम क्रीज जा रहे हैं, हम डे नेम निकाल रहे हैं. एक्सट्रैक्ट कंप्लीट कंपोनेंट, तो वैसे सब कुछ निकाल सकते हैं इससे हम. डेट डिफरेंस, नंबर ऑफ डेज बिटवीन डेट्स. हमें तो डेट डिफ में नंबर ऑफ डेज बिटवीन डिफरेंस देगा, मतलब दो डेट्स के बीच का डिफरेंस डेट डिफ से आ जाएगा. ऐड डेज डेट ऐड, मतलब हमें एक फॉर एग्जांपल कुछ डेट दे रखी है तो उसमें हम 10 दिन और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा वो देगा. सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम. ऐड मंथ्स, वी कैन इवन ऐड मंथ्स. ऐड ईयर्स, वी कैन इवन ऐड ईयर्स. एक्सट्रैक्ट आर, मतलब नाउ से सब कुछ निकाल सकते हैं. फॉर्मेट कर सकते हैं हम इसको यूजिंग डेट फॉर्मेट थिंग एंड हम उसमें ये सब दे सकते हैं. परसेंट डी मतलब डेट, डेट हो गया, मंथ वगैरह ये सब हम दे सकते हैं. ठीक है, डेट डेट. आई जस्ट काइंड ऑफ गॉट द वो ओवरऑल बेसिक्स. मेरे क्वेश्चन का लॉजिक बहुत सिंपल है. अगर माई एसक्यूएल माइंडसेट से देखो. ओके, सो गिवन डेट से nth, ये फंकी क्वेश्चन है भाई देखा जाए तो. गिवन डेट से nth संडे इन फ्यूचर निकालो. ठीक है, कैसे करेंगे अब हमें. एग्जाम्पल, हम जाएंगे डेट पे और एन हमें क्या होगा, डेट दे रखी होगी और एक एन दे रखा होगा. अब आउटपुट क्या देखेंगे, अगर क्योंकि फर्स्ट संडे हमारा 7 प्लस का आएगा और उसके बाद हम ऐसे कर लेते तो एसक्यूएल सर्वर क्वेरी को डिकोड करते हैं. तो ये एसक्यूएल सर्वर क्वेरी है जो लिखी थी हमारे पास, ये एसक्यूएल सर्वर क्वेरी लिखी हुई है. ओके, तो लाइक टुडे डेट इक्वल टू, मैं टुडे डेट हमें दे रखी है संडे, हम मान लेते हैं. हमें ये लिख मतलब अगर डेट ऐड में वीक, मतलब वीक ऐड कर दिया हमने. जो भी हमें डेट गिवन है आखिर जो हमें डेट देनी है वो हमें यहाँ देनी है. जो हमें ऐड करना है उसका हमें पैरामीटर यहाँ देना है और जो करना है एक्जैक्टली वो हमें यहाँ देना है. पैरामीटर है इसलिए हमें शायद एट द रेट देना पड़ रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसा ही हुआ है.
एट द रेट नहीं होता। एसक्यूएल सर्वर डिफॉल्ट नंबरिंग संडे वन होता है, मंडे टू ऐसे होता है। तो डेट पार्ट जो है उसमें वीक डे और ये ऐसा कुछ हुआ है। सो अगर हम ये लिखेंगे, दिस वाज डेट ऐड, जो ऐड करता है डेट पार्ट इज लाइक उसमें से ऐसे वीक डे लिखा तो ये हमें रिटर्न कर देगा कि आज का डे मतलब क्या है, डेट पार्ट क्या है। दिस इज लाइक डेट पार्ट आई गेस। सो अगर हमने यहाँ से डेट पार्ट निकाल दिया, फॉर एग्जांपल अगर आज संडे है तो संडे का फॉर एग्जांपल वन है, तो वो वन आ जाएगा। तो जो भी आएगा हम उसको बाहर निकाल देंगे। और 8 - 1 इक्वल टू में 7, फॉर एग्जांपल 7 आ गया। टुडे डेट, डेट ऐड उसमें से हम 7 प्लस करेंगे टुडे डेट में। फॉर एग्जांपल अगर आज संडे है दैट इज मीन आज वन है, ठीक है। तो अगर मेरे को नेक्स्ट वन चाहिए तो उसके लिए मुझे 7 दिन तक जाना पड़ेगा, लाइक 2 3 4 5 6 7, एंड अगला मतलब 7 बाद ही आएगा ना काइंड ऑफ। तो 8 - 1 हो जाएगा, अगर 2 हुआ तो 8 - 2 6 टाइम्स बाद आएगा। तो ऐसे ऐसे करके होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर वन है, दैट संडे है तो हो गया। अगर सैटरडे है तो अगले दिन होगा तो एक दिन बाद होगा। तो हमें डेट ऐड ऐड और फिर अब 8 - कुछ को टू डेट, तो डेट पार्ट के अंदर से हम निकालेंगे क्या होता है हमारा। और फिर हम टू डेट में वो ऐड कर देंगे, ऐसा कुछ होने वाला है। सिर्फ डेट ऐड में अगर भी ऐड हो गया तो हम वीक भी ऐड कर सकते हैं। वीक ऐसा है कि नेक्स्ट हमारा एक्रेंस कब होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया तो हम इसमें वीक ऐड कर देंगे कि अगली वीक कब आई है सब। ठीक है। माई एसक्यूएल वर्जन में हम डे ऑफ वीक हम डेट से ऐसा निकालते हैं, डे ऑफ वीक। इसमें भी सेम तरीका होता है हमारे पास। ओके। तो हम मानते हैं ये दे रखा होगा हमें, हम कुछ ऐसा निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये दोनों सेट कर रखे हैं। अब सिलेक्ट डेट ऐड, हम इसमें ऐड करेंगे। पहले तो हम नॉर्मल जो हमारे पास तो डेज की डेट है उसमें हम कुछ तो इंटरवल ऐड कर रहे हैं यार, उसको तो डे कर रहे हैं। इसके अलावा और कंफ्यूजिंग है भाई। अरे ये कि हाँ डेज ऐड करने हैं, लाइक डेट ऐड हमारा इस फंक्शन में क्या है कि पहले हम दे देंगे और कितना ऐड करना है वो दे देंगे कॉमा डाल के। और कित क्या है वो डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो दो ही है इसके अंदर, दो ही पैरामीटर्स आ रहे हैं मेरे हिसाब से। इसमें भी दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, ठीक है, गॉट इट। आई गॉट इट नाउ। तो नाउ कुछ तो पेरेटो प्रिंसिपल आने वाला है, ठीक है। ओह fuck भाई। सो आई गेस बेस्ड ऑन जनरल ये सारे मेरे को थोड़े से तो करने ही पड़ेंगे आज। टूर्नामेंट विनर्स भी करना है, मार्केट नेसेसिटी तो रहना। क्या 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 ओके 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 ओके।
तो बेसिकली हमारे पास कुछ तो ऐसा है कि जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज लाइक हमारे पास कुछ तो एक डेटा दे रखा है ऑर्डर्स का. वी हैव a big data chunk of orders, and according to Pareto principle, 80% things is due to 20% things. Like suppose ऊपर ऊपर से causes consequences जो भी है. So now for a company we have to calculate that 20% ऐसा कुछ करना है. तो मेरे को अगर देखा जाए इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं सारी सेल्स जो है ना, वो सेल्स को पहले तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा. ठीक है, ग्रुप बाय किससे करना पड़ेगा हमें? ग्रुप बाय प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट से करना है, या फिर जो से बायर है, तो मतलब जो भी जिसको हम बेच रहे हैं, जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उससे करना पड़ेगा ग्रुप बाय. एंड टोटल सेल्स निकालनी पड़ेगी. एंड जो भी सेल्स निकालेगा हम उसमें कुछ तो रैंकिंग वगैरह यूज़ करके हम उसको 20% रुपये से, 20% से ऊपर वाले ही टोटल, या 80% से ऊपर इसकी भी सेल्स, 80% होना चाहिए ऐसा कुछ. तो हम हर कॉलम के साइड में कि अभी तक हमारी कितनी सेल हो गई, अभी तक हमारी कितनी सेल हो गई, ऐसा करके हम 20% ऊपर के कस्टमर निकाल लेंगे मेरे हिसाब से. अभी तक मेरे इतना दिमाग में आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है. So select product ID, and for the product ID sum of sales group by product ID order by group sales descending. ठीक है, this is what I was telling about. सो मैं किसको ऐसे रनिंग टोटल, कुछ रनिंग टोटल वगैरह नहीं होना चाहिए इसके अंदर? रनिंग टोटल वगैरह ऐसा कुछ तो. I can think of it now, man. I can fucking think of it. I am him, bro. I am him. So I'm coming.
So yeah. So basically, first, I think I need to learn window functions again. So window functions versus group by with a table example. Good. Uh, so basically, for example, मेरे को एक employee ID employees table दे रखी है. I have an employees table in which I have columns like employee ID, department, and the salaries of the employers. So for example, of the group by, suppose interviewer ask find the total salary of each department, total salary. So we can usually group by department and we can calculate the sum of salary. So this will be like this. But what about I remember window functions now. For example, now if we have to print employee ID with the like employee ID, we want employee ID and department and total salary. For example, salary and also the total salary of the department. So we need another column, but with the this like 1, 2, and 3 employee ID, which we are not using in the group by, for example. So this will get out of the new table which will be formed when we will use the group by department. So yeah, what happened? Original rows 5 rows become only 2 rows. Yeah, group by collapse करती है rows को. Yeah, like group by collapses the rows. Window function show each employee and department total salary. Okay, so we'll show employee ID, we'll show department, we'll show salary, and we'll show sum of salary over partition by department as total. Great. So all original rows remain and window function add information without removing rows. Okay. मंत्रा की सेल लग रही है भाई. So golden rule, many rules, one row per group, many rows with extra calculations. Average salary निकालनी हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं. अगर हम विंडो फंक्शन से निकालनी होगी तो हम इनके रिस्पेक्टिवली हम देख सकते हैं एवरेज सैलरी क्या होती है. सो या सो डेंस रैंक से हम रैंक निकाल सकते हैं कुछ कुछ. ठीक है ठीक है. एंड हाईएस्ट एम्प्लॉय हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय में हम ग्रुप बाय लो न्यूक्लियर लाइक दिस. बट एम्प्लॉय आईडी लॉस्ट हो इसमें हमारी. तो हमें हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय निकालना है तो हम इसमें विंडो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. सेलेक्ट दिस डेंस रैंक और सैलरी डिसेंडिंग. ओके ओके गॉट इट. So this will we will get for each department we will get like the ranking of the employees according to the salary. Running total, yeah, we are going to do this. So for example, day one by 100 sales हुई, day two by 300 हो गई total मिला के. So you have to do the running total. So daily sales, sum of sales over as running total. So sum of sales हम कर रहे हैं और respectively कर रहे हैं order by day. Yeah, order by day. ठीक है. Okay. Now I got it. So do you have a like data set link? I'm gonna try by myself. So do I have a data set link or not? Oh, yeah, this is the data set link. What is the name of? I guess this is like super. Uh, so do we have a product ID? No, we don't have a product ID. We have a product ID. And is it related to the stack or like the product sales? So should I check? Wait a second. I will go and check. What about the state California and everything?
I guess no, not friend, not person, not returns. Biometrics. Mm-hmm, 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 mm-hmm. So एक काम करते हैं हम बस लिख लेते हैं कि हम no way we are into corporate. So we have to grow by like by product ID and we have to calculate the sum of sales and now on for the month. Hmm. What is this, bro? So yeah, explain this. इसको हटाना पड़ेगा. यहाँ तक यहाँ पे हो रहा है. So yeah. So तो हर रो तक का कम्युनिटी सम होता है रनिंग टोटल. ठीक है. एग्जांपल समझते हैं. टेबल हमें दे रखा है जैसे कुछ कुछ सिलेक्ट सम नॉर्मल सम हो गया. रनिंग टोटल. रनिंग टोटल नॉर्मली भी होता है वही मैं बोल रहा हूँ बट ये क्या हो गया. ठीक है. अब तुम्हारी क्वेरी सम ऑफ प्रोडक्ट सेल्स ओवर प्रोडक्ट ओवर बाय प्रोडक्ट डिसेंडिंग टू प्रोडक्ट डिसेंडिंग कर दिया. रोज बिटवीन अनबाउंड एंड प्रीसीडिंग एंड करंट रो ये लिखो. What the fuck is zero preceding by? Uh, what does unbound and preceding means? Start from the very first row and include all the rows up to the current row. ये नहीं समझा पा रहा है. बहुत टाइम लगाएगा.
रनिंग टोटल मैं देख लेता हूँ मैं क्या जा रहा है मेरा एक दिन में रहेगा। वो तो अटक रहा है आजकल चैट जीपीटी भाई। तो मंथ ऑर्डर सेंडिंग। सो दिस लाइक अनबाउंडेड प्रोसीडिंग लाइक ऊपर तक। और जीरो प्रोसीडिंग मतलब कि करंट रोज और अनबाउंडेड प्रोसीडिंग मतलब ऊपर तक अपना कैलकुलेट उधर है। ठीक है, आई गॉट इट नाउ। तो ये तो रनिंग चल रहा है, अभी हमें वो भी निकालना है कि टॉप कर रहे हैं।
Okay, so basically, for example, I got it now. Got this, 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 I got this, got this. So कुछ तो बढ़िया सा सिनेरियो इसको सुनाने वाला है. Throw it. तो देखो मैं क्या कहता हूँ ये कुछ तो मेरे को सबसे ज़्यादा डेटा सेट इसको करना है. कौन सा है? अ, मेरे को खुद करने में ज़्यादा मजा आता है क्वेश्चंस को. आई वांट डेटा सेट हो. मैं ट्राई करता रहूँगा तो कुछ बनाता. सो बेसिकली पर्सन आईडी नेम ईमेल स्कोर ये हमें दे रखा है और हमें क्या करना है कि पर्सन आईडी है स्कोर है पर्सन आईडी और फ्रेंड आईडी भी दे रखा है हमें कुछ ऐसे एक गिवन चीज़ है दो चीज़ें हैं. सो मेरे को एक क्वेरी लिखनी है टू फाइंड द पर्सन आईडी पर्सन नेम सॉरी पर्सन आईडी पर्सन नेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स. ओके. सो वन के कितने फ्रेंड है. फॉर एग्जांपल वन के हम काउंट कर लेंगे पर्सन आईडी में हमारे कितने फ्रेंड है. तो ये हमारी जो फ्रेंड टेबल है उसमें हम काउंट कर लेगा तो इजीली हो गया. सम ऑफ मार्क्स सम ऑफ मार्क्स ऑफ पर्सन वो है फ्रेंड्स पे टोटल स्कोर. सो फ्रेंड वाला स्कोर भी कैलकुलेट करना है ऐसा कुछ है क्या? आपकी पबली माय फ्रेंड्स नेम इज बबली बबली एग्जाम में वो टॉपर मांगे सपली सपली लेकिन बबलू के प्यार में वो पगली पगली अहमदाबाद से वो नागपुर की ट्रेन में भगली. कितने बजे टिंग 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 मुझे कितने बजे टिंग 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 मेरे बच्चे टिंग टिंग की कटिंग मेरा फोन पर ट्रिंग 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 पूरे नाउ ईयर मैन पूरे ना होता टिंग 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 टिंग. The thing is to not think, the thing is to think, think. औकात से बड़ा अपनी हैसियत से बड़ा सोचते रहे. व्हाट एडिटिंग रील में. ठीक है. सो बेसिकली हमें ये सब करना. मेरे को कहते हैं पर्सन कुछ कुछ फ्रेंड वाला है मैं देखता हूँ यहाँ पे कहाँ है. ये फ्रेंड वाला मेरे को लग रहा है ये होगा. भाई साहब छी. तो मैं इसको क्या करूँ मैं इसमें क्या करूँ मैं. कैन आई डू दिस लाइक कैन आई कन्वर्ट एक्सेल टेबल इनटू एसक्यूएल. गुड. ओके. बढ़िया तो मुझे लगा हो जाएगा. लेट मी सी. सो मैंने इस पर क्लिक किया एंड आई आई मेरे को भी कर दे यार. एक पर्सन टेबल बना.
Hmm. Use प्रेजेंट टेबल बन के अब डेटा इंसर्ट करते हैं. डेटा इंसर्ट हो गया. अब फ्रेंड टेबल बनाएंगे. ठीक है. Now everything is good. Like okay. Now we have the table. अब मुझे बताओ क्या करना है. Find person ID. Person ID name number of friends. So for number of friends ठीक है. नंबर ऑफ फ्रेंड्स के लिए क्या करना. नंबर ऑफ के लिए तो ग्रुप बाय भी हो जाएगा. ग्रुप बाय अकाउंट ठीक है. You can do this group by account and for the sum of marks of person who have friends with total score greater than, so sum of marks of person, so we have to calculate a sum of all the person whose friend total score is, a group of friend total score is, who have friends with total score greater than 100. So I think I got टोटल स्कोर है भाई. कुछ तो टोटल स्कोर किसी का अंडर नहीं है. 500% ऑफ फ्रेंड्स देख लेगा. अच्छा तो जितने भी है उसके एक मिनट. तो मैं अगर करूँ पहले तो सिलेक्ट ठीक है. सिलेक्ट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम फ्रेंड ठीक है. अब मेरे पे ये आ गया. अब देखो सिलेक्ट पर्सन आईडी. पर्सन आईडी. अब मैंने इसको फ्रॉम लिया फ्रेंड ग्रुप. अभी मैंने अभी नहीं ठीक है. ग्रुप आईडी और यहाँ पे ले भाई. 1 के 2, 2 के 2, 3 का 1, 4 के ठीक है. इतने तो हमारे दोस्त लोग आ गए बेटे सबके. अब क्या करना है. अब मुझे आई थिंक बिफोर दिस और मे बी इसको मैं एक सीडी बना के रख सकता हूँ. इसको मैंने एक सीडी बना के रख दिया ठीक है. अब ऐसे ये मैंने बना के रख दिया. बट अभी मैं सिलेक्ट फ्रॉम हमारा पर्सन देखना चाहता हूँ. पर्सन में क्या क्या है अभी हमारा. पर्सन में ये है. तो अब मेरे को क्या करना है. अब मेरे को नेम में ब्रांड करना है. तो नेम के लिए मेरे को इन दोनों को ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा ठीक है. और मैं चाहता तो वो भी हूँ कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स के साथ. तो मैं एक काम कर सकता हूँ. मैं ये नहीं सोचा. तो मैं सी टी एस सिलेक्ट पर्सन ग्रुप ऐड हूँ ठीक है. फ्रेंड आईडी में आना दो और काउंट ऑफ ओवर पार्टीशन बाय पर्सन आईडी.
Hmm. As number of facts. I want to see क्या होता है ये. Hmm. आ गया. ये याद तगड़ा हुआ कि फ्रेंड आईडी भी आ गया. अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ ना, क्योंकि एट द एंड मेरे को फ्रेंड आईडी का वो काउंट करना है, 2 और 3. तो मैं जाऊँगा पर्सन 1 पे. पर्सन 1 पे जाके मैं उसका वो कैलकुलेट करूँगा. पहले तो मैं इनको ज्वाइन करना चाहता हूँ, ज्वाइन करके देखना चाहता हूँ क्या बनता है. सिलेक्ट ऑल city from city join person on city dot person तो person id इक्वल टू में person डॉट इसको पी सी टी कर देते हैं. सी पी सी और person id इक्वल टू में पी डॉट पी में क्या है, पी में भी सेम है. ठीक है, लेट्स सी अभी क्या होता है. मुझे तो कुछ पता नहीं है ये चलेगा भी नहीं चलेगा, क्योंकि और दोनों में पर्सनैलिटी है तो ज्वाइन तो चलना चाहिए मेरे हिसाब से. मेरे कुछ और दिक्कत होगी. टेबल प्रैक्टिस डॉट सी टी डज नॉट एग्जिस्ट. आगा इट्स अ सी टी, तो मेरे को पूरा एक साथ रन करना पड़ेगा. ओके सो ये लो. ठीक है. तो अब क्या है, अब क्रेजी थिंग आ गई भाई कुछ तो, कि एलिस में क्या हो रहा है. पर सिर्फ पर्सन आईडी है, अगर ऐसा हो रहा तो 1 1 2 3 1 1 के साथ 1 1 आ गया. एलिस के 88 काउंट होगा. ठीक है. ठीक है अभी तक. इससे क्या हो सकता है कि हम नेम ले लें. सिर्फ नेम ही लेना है मेरे को इसका स्कोर से कुछ मतलब नहीं है. मेरे को स्कोर लेना है फ्रेंड आईडी के. फ्रेंड आईडी के स्कोर के लिए मेरे को तो ज्वाइन करना पड़ेगा, फ्रेंड आईडी पे करना पड़ेगा. तो अगर मैं ज्वाइन करूँ सी डॉट फ्रेंड आईडी पे, तो क्या कहीं से कुछ बताएगा. तो देखो 2 1 में ओके सो 1 1. तो एक मिनट रुको मेरी बात. इसको ऑर्डर बाय भी करो पहले तो. नहीं नहीं इसकी कोई गलती नहीं है, इसका नाम गलत है यार. सिटी में मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ ना. तो पर्सन आईडी का तो पी आई डी लिखेगा हूँ. पी आई डी फ्रेंड आई डी. ठीक है. इतना ही ठीक है. अब इसमें ठीक है. अब मुझे पता है कि किस लिए हुआ है. तो जैसे अब फॉर एग्जांपल फ्रेंड आई डी इक्वल टू में पर्सन आई डी कर दिया मैंने. पहले तो मैं ज्वाइन को उल्टा करूँ. अच्छा नहीं लग रहा मेरे को पूरा समझने के लिए. इसको ढंग से करना पड़ेगा. हाँ अब ठीक है थोड़ा बहुत. तो अभी ईमेल वगैरह हटा देता हूँ. तो मैं इसमें सिलेक्टिव चीज़ लेके आता हूँ. पी डॉट पर्सन आई डी नेम स्कोर पी आई डी फ्रेंड आई डी नंबर ऑफ फ्रेंड्स. मान लो अभी तक ये है. ठीक है. मैं उसका पूरा भी ले सकता था बट कभी समझ रहे. अब हम समझ रहे. तो अब क्या कर सकते हैं. अब हमें क्या चाहिए इसके अलावा, नंबर ऑफ फ्रेंड के अलावा स्कोर चाहिए. स्कोर चाहिए मेरे को. फॉर एग्जांपल एलिस है तो एलिस हमने फ्रेंड आईडी से एलिस को जोड़ दिया. पी आई डी इज लाइक पर्सन आई डी है. तो अगर मैं इसको अब ग्रुप बाय करूँ, पर्सन आई डी है कैलकुलेट फॉर अ पर्सन आई डी फॉर एग्जाम्पल 2 है. तो 2 से एलिस का स्कोर जुड़ेगा.
टू के कितने दोस्त हैं? टू के दो दोस्त हैं। तो अब मेरे को इस पूरे का, अगर मैं इस पूरे को CD2 मानूँ ऐस करके, मैं इसको चेंज कर दूंगा। ये लो, विद हटाना पड़ेगा। अगर मैंने मान लिया ये किया, आप देख सकते हैं। आप देखो, अब मेरे को क्या करना है, सिलेक्ट फ्रॉम CD2, फ्रॉम CD2 सम करना मेरे को स्कोर का ओवर पार्टीशन बाय PID एज टोटल फ्रेंड्स स्कोर। मेरे को इसको पूरे पर रन करके देखना पड़ेगा। अब देखो, अब PID 1 मतलब हो गया। PID 1 मतलब कि हम एलिस के लिए देख रहे हैं। एलिस के दोस्त रहे बॉब और डेविस। 11 और 27 तो 38 आ गया। ठीक है। अब अब आया हमारा PID आया 2। दो मतलब हमारा दो कौन है? दो हमारा है बॉब। ठीक है, बॉब है। अब बॉब का हमारा, ठीक है, अब दो हमारा है तो हमने 115 आ गया। 1 ठीक है, हिस्सा हो गया था कि 4 का आया। तो लाइक फोर्थ बंदा जो था, फोर्थ बंदा कौन है यहाँ पे? फोर्थ बंदा था कौन? फोर्थ तारा थी। तारा दीदी का, अब वो कहाँ गया? शिट। हाँ, तो तारा, तारा का 101 आएगा तो प्रिंट करने में। तो मैं बस कहाँ रह रहा हूँ कि मेरे को PID के साथ नाम प्रिंट करना है। मेरे को बस वो चाहिए था जो कि मैं नहीं कर पाया हूँ। PID में मेरे को उसका नाम भी प्रिंट करना है, PID का नाम प्रिंट करना है। तो मैंने ज्वाइन गलत किया पहली बात। तो मेरे को ज्वाइन ऐसे नहीं करना, पर मैंने ज्वाइन से आंसर सही निकाला है। ज्वाइन अगर मैं पर्सन आईडी को पर्सन आईडी कर दूंगा तो पर फ्रेंड आईडी, वैसे में उसकी फ्रेंड आईडी मिल जाएगी फिर। ये तो कर सकते हैं हम, फ्रेंड आईडी तो मिल ही जाएगा। It's like I have done good. I have literally printed this, but not quite this. I have done the join wrong. I think I have to do the join thing again. Some of this is like crazy good. Okay, so some of this like person ID. So एक काम कर सकता हूँ मैं इसमें, मैं बताता हूँ। अगर इसके अगर मैं पर्सन आईडी करता हूँ मैं, PID मेरे को एक बार देखना है कि PID करता हूँ तो मैं सिलेक्ट दिस फ्रॉम CD2 में क्या आता है। बहुत बेकार आएगा, मतलब एलिस एलिस आ गया और एलिस के फ्रेंड का आईडी आ गया। अब मैं फ्रेंड आईडी से फ्रेंड का स्कोर मैच कर सकता हूँ क्या मैं? इस पूरे को मैं 32 मानता हूँ ना। तो सेलेक्ट CD2 डॉट दिस, देन हमारा
person dot score बाद है from हमारा ct2 join person p on. अब हम करेंगे c2 dot friend id इक्वल टू में p dot हमारा पर्सन आईडी. ठीक है, अब मेरे को लगता है कि अब बेटर आ जाएगा. और अगर मेरे ये आ गया तो पहले ये भी इसको हटाओ. दिक्कत आ गई तेरा ct2. अलाइज दे दिया मैंने उसके आगे में. ठीक है, तो अब मैं इसमें कह रहा हूँ अब इसको मैं सम कर दूंगा. अब मेरे को क्या करना है, इसको हटाओ सम को. पी स्कोर है ना, तो अब मेरे को सम पी डॉट स्कोर ओवर पार्टीशन बाय. या मैं इसको वो भी कर सकता हूँ, क्या बोल जाएगी, ग्रुप बाय करके भी कर सकता हूँ. पार्टीशन बाय c2 डॉट नेम से कर देता हूँ. as total and score. Let me see what I can get from this. हाँ, अब ठीक है, हम गॉट इट. तो अब मैं सी टी डॉट इसको हटाओ. ठीक है, अब क्या क्या चाहिए था, c2 डॉट नेम चाहिए था. पर्सन आईडी प्रिंट करनी थी, पर्सन आईडी प्रिंट करनी थी. c2 डॉट पर्सन आईडी c2 डॉट नेम हो गया. नंबर ऑफ फ्रेंड्स c2 डॉट नंबर ऑफ फ्रेंड्स टोटल फ्रेंड्स को. अब देखिए, अब टोटल फ्रेंड्स स्कोर हम निकालेंगे सम ऑफ पी डॉट स्कोर. ठीक है, आई गॉट इट. अब इस पूरे को लिख लो विद सी टी रिजल्ट सी टी एस करके ये लो, इधर डालो कॉमा, और आखिरी में सेलेक्ट रिजल्ट और सेलेक्ट रिजल्ट सी टी वेयर total and score is either 100 or like, okay, yellow white done. Then 2 2 3 we got it. I got it by myself.
and I'm happy for it. But I have taken a very long time, and I'm making 3 CT for this, and I'm done with myself. I'm just done with myself. I'm fucking done with myself. So I'll be like, okay, crazy, crazy thing. So okay, this was so easy, fucking so easy, and I like make 3 CTs. 3 CT. So like upload person ID and develop person friend ID, एंड मैंने स्कोर वहाँ से ले लिया पर्सन से, स्कोर मंगा लिया मैंने, फ्रेंड स्कोर फ्रॉम फ्रेंड की, और मैंने वहाँ पे पर्सन आईडी रखा, यहाँ पे फ्रेंड आईडी दी गया, तो फ्रेंड आईडी का स्कोर आ गया बेसिकली, फ्रेंड का स्कोर आ गया, मैंने इसमें दे दिया। अब मैं इसको ग्रुप बाय करके एग्रीगेट करके सम ले लूँगा, और देन मैं ये हमारे पास सम आ गया सारा, तो मैं फिर बाद में इजीली नंबर ऑफ फ्रेंड भी मैं कर सकता हूँ इसके अंदर काउंट ऑफ करके कि नंबर ऑफ फ्रेंड कितने हैं, तो एक ही टेबल से मेरा सब कुछ हो गया। फक, सो इजी, सो इजी, सो easy. And I made this like this big, this big solution I made. And this was like small tiny solution. We're gonna select if, तो मैं ये हटा देता हूँ। परफेक्ट। या मैं इसको एक में निकाल सकता
I got it. I got it. But यहाँ पे नेम डायरेक्ट नहीं ले सकता था मैं. काउंट ऑफ फ्रेंड्स में मैंने पर्सनल आईडी के हिसाब से किया है ना. पर्सनल आईडी और नेम तो ठीक है ना, सेम ही तो है. आई डोंट नो कि चिड़ा. सो कौन सा क्वेश्चन पे आ गया हूँ मैं. चौथा पाँचवा हुआ, फिफ्थ क्वेश्चन फाइनली हुआ. आज मैं फाइनली थोड़ा कुछ कर रहा हूँ, मेरे को फील आ रहा है. सो फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, स्केल क्वेरी. I'm doing easy question, but still I'm doing something about them and nothing. Uh, so yeah, I like this type of question. Yeah, good. So I'm gonna go and use practice. I'm choosing the schema, and then I'm gonna make tables and everything. दो टेबल बनाएंगे, मेरे को देखना है कि मैं ट्रिप्स और ट्रिप्स एंड यूजर्स. ट्रिप्स में क्या है, ट्रिप्स में हमारे पास है आइडिया, क्लाइंट आइडिया, ड्राइवर आइडिया, स्टेटस है, कंप्लीट हुआ, कैंसिल हुआ, ड्राइवर से ड्राइवर की आइडिया है. तो अगला वहाँ पर ट्रिप है और अगला यूजर्स है. यूज़र में आईडी वन, बैंड, रोल, क्लाइंट, दो टाइप के रोल्स, क्लाइंट ड्राइवर है. तो ये काइंड ऑफ ऊबर टाइप लग रहा है मेरे को चीज़ें. डेट वाले पेज इतने बेकार होते हैं ना. डेट वाले भी करना है. So write a SQL query to find the cancellation rate of request between unbanned users. Okay. With unbanned users. So दो टाइप के यूजर्स, बैंड भी है अनबैंड भी है. तो हमें सिर्फ अनबैंड वालों में जाना है. Must not be banned each day between राउंड कैंसिलेशन रेट. ओके, तो हम इसको राउंड कर देंगे 2 डेसिमल तक. द कैंसिलेशन रेट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ कैंसल्ड. तो हमें एक काम करना है. तो हमें क्या क्या करना है, पहले तो अनबैंड यूज़र चेक करना पड़ेगा. उसके लिए मेरे को यूज़र आईडी और जो यूज़र्स आईडी को इफ़ क्लाइंट है, अगर रोल क्लाइंट है तो मैं यूज़र आईडी को क्लाइंट आईडी से मैच करूँगा. और ना अगर ये ड्राइवर है तो मैं उसको ड्राइवर आईडी से मैच करूँगा. अभी मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, मेरे को डेट क्या देखनी है कि मेरे को ईच डे 1 से लेके 3 तारीख तक का मेरे को हर दिन के बीच का एक कुछ रेट निकालना है. फॉर एग्जांपल कुछ रेट निकालना है, कुछ भी हो, अब बाद में देखेंगे. नंबर ऑफ कैंसिल्ड रिक्वेस्ट है वैसे तो, डिवाइडिंग मतलब कैंसिलेशन रेट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ कैंसिल्ड अपॉन में टोटल नंबर होगा. मेरे सबसे थोड़ा नंबर रिक्वेस्ट विद बैंड यूजर्स. तो दो टाइप के यूजर्स हैं, अनबैंड है और बैंड है. ठीक है. अब मेरे को अनबैंड यूजर से डील करना है, तो मैं जहाँ भी बैंड में ऐसा होगा
उनको मेरे को कैलकुलेट नहीं करना है, उसके मैं शायद केस बनाऊंगा या फिर कुछ करूँगा आई गेस, या फिर मैं वेयर सिचुएशन यूज़ कर लूँगा या फिर मैं कुछ भी यूज़ कर लूँगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो भी स्टेटस कंप्लीट है मेरे को उन सब का सम लेना है। सम ही लेना होगा ना, एडिंग नंबर, नंबर है काउंट ले लेगा, ठीक है। तो हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड। अच्छा तो मेरे को बस यहाँ पे चेक करना है कि इन दोनों में से वन आइलैंड आईडी या ड्राइवर आईडी में से for every like for every trip I will go and check if any client or driver is banned। अगर बैंड नहीं है तो पहले तो अनबैंड वाले की एक लिस्ट बना देंगे, फिर हम कंप्लीट वाला ग्रुप करेंगे, कैंसल्ड ग्रुप करेंगे, और फिर डेट वाइज हम ग्रुप कर देंगे। डेट वाइज ग्रुप करके कंप्लीट और होगा करके हम आएगा, वो तो बहुत ईजी है। मेन है बस वो अनबैंड वाले को चेक कैसे करना है, उसके लिए मेरे को कुछ तो ग्रुप करना पड़ेगा या फिर कुछ तो केस वगैरह यूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी। तो की उत्ते VVS शाइन कर दी भाई पता लगदा कि भाई वेट अ सेकंड भाई, बहुत ट्रिप टेबल ली, उसमें क्लाइंट आईडी विद आईडी से मैच किया, उसके बराबर में लिख दिया कि वो है या नहीं है, आई क्यों क्लाइंट आईडी तो है। तो ग्रुप बाय कर लेगा। सीटी बना लेगा इसको।
ठीक है। तो सम कर देंगे, और सम भी कर सकते हैं, वन ही तो था। तो डेसिमल नहीं है, तो हमें वन को डेसिमल बनाना पड़ेगा। अब इसको राउंड बाय टू करना है। ग्रेट वीडियो। टूर्नामेंट विनर्स। तो दो चीज़ बनाया है हमने, टेबल बनाया है, एक तो प्लेयर्स, इसमें हमारा प्लेयर है और ग्रुप आईडी है बस तो। और दूसरा बनाया है मैचेस, इसमें हमारा फर्स्ट प्लेयर सेकंड प्लेयर ग्रुप आईडी मैच हो गया। सो ग्रुप आईडी और टेबल प्लेयर दोनों। एक प्लेयर है जो प्लेयर कौन से ग्रुप पे बिलोंग करता है, टेबल मैचेस है, मैच आईडी है, फर्स्ट प्लेयर सेकंड प्लेयर फर्स्ट प्लेयर। तो मेरे को एक एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है, उसमें मेरे को क्या क्या है देखते हैं। सिक्स्थ। हम्म। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द विनर इन ईच ग्रुप, तो मेरे को हर ग्रुप में, हर ग्रुप के लिए तो सीटी पता नहीं बनाने की मेरे को आदत पड़ गई है अब लग रहा है। तो मेरे को पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा और ज्वाइन करना पड़ेगा। सिलेक्ट फ्रॉम, और देख मेरे को प्लेयर ग्रुप, इसको पी मान लेते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं मैचेस एम ऑन पी डॉट, ऑन पी डॉट पर्सन, फर्स्ट प्लेयर सेकंड प्लेयर है, आईडी है क्या? हाँ आईडी। हम्म। तो दो टाइप के ज्वाइन होंगे ना। या तो मैं दोनों का यूनियन कुछ कर सकता हूँ। दो ज्वाइन कर लेगा, इतना ही हो गया।
कबाड़ा कर दिया मैंने। हम्म, अब ठीक है। देखो सुनो, होना तो ये डेंस रैंक से चाहिए, बट मैं इसको नॉर्मली एक बार देख रहा हूँ कैसे करना चाहिए। होगा तो डांस रैंक से इजीली हो जाएगा डांस रैंक, पर उसके लिए भी मेरे को पहले ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। डबल नहीं काउंट हो गया? अरे यार रुको यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ, उसके बाद रेस्ट लूँगा।
सो देखा जाए तो मैंने अभी तक कहाँ तक कर लिया, मैंने 15 किया, 15 दो बार है, 15 ले गए। और तो जो भी हमारा भी ये है, तो ये जो भी हमारा अभी इसको सीटी बना दे भाई पहले तो। ठीक है, ठीक है। टाइम आया। अब अब चेंजेस करता हूँ मैं। अब देखो, अब प्लेयर आईडी को मिल लिया, तो जो सीटी है ना, सिलेक्ट फ्रॉम सीटी, सिलेक्ट प्लेयर आईडी फ्रॉम सीटी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है मेरे को, सम करना है फर्स्ट स्कोर केस व्हेन, प्लेयर आईडी कर दिया। अब उसमें प्लेयर आईडी केस एंड प्लेयर आईडी इक्वल टू माई फर्स्ट प्लेयर, देन हमें सम करना है फर्स्ट क्लब, एल्स एंड। अब मेरे पे आ गया ग्रुप आईडी के हिसाब से, कुछ आ गया मेरे पे। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया खेल रहा हूँ इधर। ठीक है, क्या करना है मेरे को, अब मेरे को ये जो पूरा है इसको मैं एक और सीटी मान लेता हूँ विद सॉरी सीटी टू एस करके। फिर यहाँ पे लगा दो ये, और इससे पहले भी लगा दो कॉमा, और सीटी टू लिखना। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब मैं सिलेक्ट फ्रॉम सीटी टू, मैं अब देखो लगता है कि अब मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं सीटी टू में 10 से रैंक दे दूंगा। ग्रुप आईडी लिया,
ग्रुप OID 1 में 1123 एंड 11 2 में 11 दोनों बराबर स्कोर पे है और 3 में 12 हो गया। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को करना है इनकेस ऑफ टाई द लोएस्ट प्लेयर आईडी विंस। तो ये कैसे करते हैं कि 1 के लिए 15। अया भाई कितना इजी कर दिया भाई तुमने ना। गांड पड़ी नहीं करना भाई। सेलेक्ट फ्रॉम प्लेयर्स किया मैंने, ज्वाइन किया, ज्वाइन वाइन कर दिया मैंने तो। कुछ करना ही नहीं था पर मैंने चल इसको ग्रुप बाय मतलब मैंने पहले एक मैच और उसको ज्वाइन कर दिया था। तो प्लेयर आईडी उसके बाद में ग्रुप करेगा ये। मैंने बस क्रेजी किया भाई कुछ तो कि मैंने वो KSN यूज कर दिया भाई, ठीक है। बहुत क्रेजी सोचता हूँ भाई।
ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम भाई, बट मेरे को बस ये स्टार्टिंग वाला अच्छा लगता, बाकी मैंने सब कुछ बढ़िया किया भाई। क्रेजी तो हूँ मैं। क्रेजी क्रेजी बात मेरी, क्रेजी क्रेजी बात, क्रेजी क्रेजी बात मेरी, क्रेजी क्रेजी बात, क्रेजी क्रेजी। मतलब इसने बेसिकली बस वो अच्छा कर दिया कि इसलिए फर्स्ट प्लेयर इसलिए आई थी। मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान किया अपने आप को कि मैंने पहले तो सारा प्लेयर्स पी को रन किया। मैंने प्लेयर्स पी को वापस रन किया, उसमें मैंने क्या ग्रुप टेबल बना दिया। फिर मैंने बाद में बस एक चीज़ किया कि मैंने सम ऐड कर दिया। उसने बहुत बढ़िया किया हुआ है कि नॉर्मल फर्स्ट प्लेयर को प्लेयर आईडी रख दिया और उसको ऐसे लिख दिया और उन दोनों को बस एनिमल कर दिया। फाइनल स्कोर बस ये ग्रुप आईडी एक बना दिया। उसके बाद हमने सम कर लिया इनका अलग अलग करके, उसको हमने वो बना दिया। फिर ग्रुप सम कैसे किया हमने, प्लेयर आईडी से करेगा सम तो, और ग्रुप आईडी भी डाल दिया। ठीक है, ग्रुप आईडी प्लेयर आईडी सम। Crazy, 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 crazy। मैं थक गया, मैं तो बहुत बहुत हो गया आज के लिए स्किल, बट बहुत सारे पेंडिंग है अभी तो यार। कोई तो मैं 9th पे आया हुआ ना, 2 till 13। किसी कॉलेज सिटी भी आ जाएगा इसके अंदर। ऑसम कॉलेज ट्रिक आने वाली है एंड सिटी प्लस लैंग्वेज और एचटीएमएल में जाऊंगा इसमें, मार्केट एनालिसिस। काम करेगा थोड़ी देर बात करिए, 2.5 घंटा करें ना आज। रिवाइज भी तो करना, चलो काफ़ी है। I did good. I did good than yesterday.